हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की जो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक है उसकी एक पोम पढ़ेंगे, मून विंड। मून विंड ये एक ख्याली नज़्म है। इस नज़्म में शायर टेड ह्यूज ने चांद की एक ख्याली तस्वीर पेश की है। इसके बावजूद कि चांद पर ना तो कोई हवा होती है और ना ही वहाँ पर किसी चीज़ का कोई वज़न होता है, फिर भी वहाँ पर सारी चीज़ें उड़ती हुई बयान की गई है। शायर ने अपने ख़यालात के ज़रिए इन सबको मुमकिन बनाया है। आज की इस वीडियो में हम इस नज़म में इस्तेमाल होने वाली वोकैबुलरी की वजाहत करेंगे। इस नज़म में इस्तेमाल किए गए दो फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सिमोरॉन और सिमिली के बारे में जानेंगे। इस नज़म का एक्सरसाइज हल करेंगे और आखिर में इस नज़म को पढ़ेंगे। सिमिली। इन मिसालों पर गौर करें। अमजद बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता है। अमजद क्लाइम्स द ट्री लाइक अ मंकी। उसके बाल रुई की तरह नरम है। हिज हेयर इज एज सॉफ्ट एज सिल्क। पहली मिसाल में अमजद के चढ़ने का बंदर के चढ़ने से मुआवजा किया गया है, क्योंकि बंदर आसानी से और तेजी से दरख्त पर चढ़ता है इसलिए। दूसरी मिसाल में किसी के बालों का रुई से मुआवजा किया गया है। उसके बाल नरम है और रुई भी नरम है इसलिए। जब किसी चीज को किसी दूसरी चीज की तरह कहा जाए उसे तशबीह कहते हैं। इंग्लिश में जब किसी चीज का दूसरी चीज से मुआवजा किया जाए तो उसे सिमिली कहते हैं। इस नज्म में लाइक अ स्वान एट सी और लाइक अ समरसॉल्टिंग जिराफ बतौर सिमिली इस्तेमाल किए गए हैं। ऑक्सीमोरॉन। अब इन मिसालों को गौर से देखिए। ये एक खुला राज है, खुशामद एक मीठा जहर है। इन मिसालों में खुला और राज दो उलट माने वाले अल्फाज है। इसी तरह मीठा जहर भी दो मुतजाद मानी वाले अल्फाज है। जब दो उलट मानी वाले अल्फाज को मिलाया जाए तो इसे ऑक्सिमोरॉन कहते हैं। अंग्रेजी में इनकी मिसालें ऑफुली गुड, बेटर स्वीट, सेम डिफरेंस एंड ओरिजिनल कॉपी है। इस नज्म की आखिरी लाइन डेड स्टिल ब्लास्ट भी ऑक्सिमोरॉन की एक मिसाल है, क्योंकि डेड स्टिल और ब्लास्ट दोनों अपोजिट मीनिंग रखते हैं। वोकैबुलरी: utter, complete, absolute. Shiver, shake slightly as a result of being cold. Shivers out, extinguishes, बुझ जाता है। Giant, of very great size, huge. Marquee, a large tent. Booms, makes loud noise. Flounders, twist and turn. Swan, a large water bird. Squall, a sudden violent gust of wind. हवा का अचानक झोंका। Knocks you off your feet, surprises you. Agog, excited or eager. Clouds, hits. Caravan, a group of people traveling together. Take off, fly. Ferris wheel, big wheel, bada jula. Somersaulting, an acrobatic movement in which a person turns head over his heels in the air. Hold fast, remain in the same position. Exercise Understanding the Poem. Section A. Question 1. Answer. Things get blown about on the moon because of the utter stillness. Everything is weightless on the moon, and it is airless. However, the poem is absolute fantasy, so anything can happen. Answer. Question 2. List of the unlikely things that take place on the moon. A squall of hens and cabbages knocks you off your feet. A tearing, twisting sheet of pond clouds you with a frog. A camp of caravans squawks. A Ferris wheel bounds along the skyline. Question 3. Answer. Candle, flame. The candle shivers out. Normally, we would say flicker, but shiver is just as good a word. Its use is odd because shivers is not associated with heat, but with cold. Here, if the candle shivers out, we feel the cold even more. Giant marquee. Blooms and flounders like a swan at sea. We have sound, blooms, and movement here. The swan is normally serene on the calm body of water.
but ungainly when it is not in its usual environment. Hens and cabbages knocks you off your feet. These are then flying disorderly and at some speed. Pond, tearing, twisting sheet of pond. Clouds you with a frog. A pond looks like a sheet of water. If this sheet were to suddenly fly towards you, it would indeed be tearing and twisting. Caravans. Suddenly, a camp of caravans squawks and takes off. The caravans, presumably parked in a caravan park, are compared to a flock of birds sitting in a field and then suddenly taking off. Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. Like a somersaulting giraffe means a spinning giraffe with its long legs sticking out would indeed look like a Ferris wheel. These questions are more difficult. Discuss them first. Question D. Answer. The last line is dead still blast. Dead still means absolutely without movement. Blast means a strong gust of wind. The poet has used oxymoron, two words used together that have the opposite meanings. Other examples of oxymoron are same difference, serious fun, terribly good, etc. Question E. Answer. Yes, I do. I like the poem because it takes us to a new world of imaginations. 2. The rhyming scheme of the poem is ABCB. Is this true throughout the poem? Yes, the rhyme scheme of the poem is ABCB. 3. Is there one pair that does not quite rhyme? Answer. Stanza 5. The words of and giraffe is not a perfect rhyme. B. Working with words. Similes. Here are some similes that you are familiar with. Can you complete them? अच्छा, अब अगर मैं इन सारी सिमिलीज को पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें और इस लिस्ट को पढ़ के आप इसको समझने की कोशिश करें. Question 2. In the poem you have just read, there are a number of similes. Now answer these questions. Question A. Make a list of similes in the poem. The similes are like a swan at sea, like a somersaulting giraffe. B. In what way are the similes unusual? Do they make the meaning clearer? The similes are unusual in that a swan at sea would not be used to the waves and would flounder. It is difficult to imagine a giraffe with such long legs doing a somersault, but when compared to a Ferris wheel flying, it becomes imaginable. See, have the pictures the poet is trying to present been made more vivid by the use of similes? Yes, they have. They are new and very clear. They make the picture more clearer. Definitions. Copy these terms into your exercise book and write a definition for each. Now you can see the definitions of the words astronaut, satellite, space shuttle, launch pad, and rocket. So stop the video for a while and copy these into your exercise book. Question 3. Copy the words given in column A below into your exercise book. Think about the correct meaning. If in doubt, look in dictionary. Learning about language. Pronoun. Do you remember reading about pronouns earlier? In each of the following sentences, a pronoun has been misused. Underline all the pronouns and then rewrite the sentences, correcting the mistakes. अच्छा, पहले जुमले को देखिए. द टीचर एंड मी क्लियर्ड द क्लासरूम. तो यहाँ पर मी की जगह आई होना चाहिए. द टीचर एंड आई क्लियर्ड द क्लासरूम, क्योंकि मी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है लेकिन मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई है. इसी तरह दूसरे जुमले में हिम एंड हिज डॉग की जगह ही एंड हिज डॉग होना चाहिए. तीसरे जुमले में द फाइट वॉज बिटवीन देम एंड वी, बिटवीन देम एंड अस, तो वी की जगह अस होना चाहिए. डी नंबर जुमले में आफ्टर दे केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन हॉर्स बैक, आफ्टर देम केम, क्योंकि आफ्टर प्रपोजिशन है और इसकी जगह इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है दे का वो लगाना होगा. ई में मी एंड द अदर बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, सो आई एंड द अदर बॉयज़
पहले वाले जुमले की तरह इसमें भी मी की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म आई इस्तेमाल करना चाहिए। इफ शी एंड हर फ्रेंड्स हैव टू बी एज केयरफुल एज वी, सो यहाँ पे शी एंड हर फ्रेंड्स हैव टू बी एज केयरफुल एज अस, यानी यहाँ पे वी जो है इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। जी इट वॉज मी हु केम फर्स्ट, इट वॉज आई हु केम फर्स्ट, क्योंकि आई सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना चाहिए। ऑल अस चिल्ड्रन की जगह वी चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑल अस की जगह वी लगाना चाहिए। वी चिल्ड्रन आर ईगर टू प्ले आउटसाइड। द हेड मास्टर गेव बाबर एंड आई अ स्कॉल्डिंग, एंड आई की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी इस्तेमाल होना चाहिए। द हेड मास्टर गेव बाबर एंड मी अ स्कॉल्डिंग। जे लेट ही एंड आई डू द वर्क टुमारो, लेट हिम एंड मी डू द वर्क टुमारो, क्योंकि लेट के बाद हमें दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है ही और आई के वो लगाने हैं। There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. In utter stillness, your candle shivers out. अच्छा, इस पहले स्टैंजा में शायर जो In utter stillness, a giant marquee booms and flounders past you like a swan at sea. In utter stillness, while you stand in the street, a squall of hens and cabbages knocks you off your feet. In utter stillness, while you stand agog, a tearing, twisting sheet of pond clouds you with a frog. A camp of caravans suddenly squawks and takes off. A Ferris wheel bounds along the skyline. Roots and foundations, nails and screws, nothing can hold fast, nothing can resist the moon's dead still blast.